Hello dear children, I extend a very warm welcome to you as well as to your parents in my English video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Follow all the safety precautions. Keep yourself safe because the situation is extremely bad outside. So it is better to stay indoors. जितना हो सके आप घर में रहो. Listen to your elders. Listen to your parents. Follow all the safety precautions. Stay home. Stay happy. Stay healthy. And most importantly, children, stay safe. Okay? So we have started. We are doing chapter number 1. And we have started with the exercises. So children, here I am with another exercise from the same chapter, that is, let us be friends. Okay? As we have already done the reading part, we know that the lesson, this lesson is about a little girl called Tia. There is a little girl called Tia in the lesson. She is telling us about herself. Okay? She is telling us that her name is Tia. She is 5 years old. She is a girl. She has many toys. Her favorite toy is a beach ball. Then she tells us about her best friend who is Mona. Then she tells that Mona and they play on the swings every day in the evening. They play with Tia's beach ball also. Now she wants to be your friends. ये lesson किसके बारे में है? We all know that this lesson is about a little girl called Tia. ये Tia नाम की एक छोटी लड़की के बारे में ये lesson है, जो कि अपने बारे में हमें बता रही है. ओके? अपने बारे में वो हमें क्या बता रही है? कि उसका नाम टिया है, वो एक लड़की है, 5 years की है, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं. उसका सबसे फेवरेट खिलौना कौन सा है? फेवरेट को हिंदी में हम कहते हैं सबसे पसंदीदा. तो उसका सबसे पसंद आने वाला खिलौना है बीच बॉल. उसकी बीच बॉल बहुत रंग बिरंगी है. रोज शाम को उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम मोना है. रोज शाम को मोना और टिया उनकी स्विंग्स पे खेलने जाते हैं और उसकी बीच बॉल से भी खेलते हैं. अभी वो अब सबसे फ्रेंडशिप करना चाहती है. ओके? फिर इस लेसन में हमने वर्ड्स किए, दैट इज स्पेल वर्ड्स वी हैव डन, एंड वी हैव डन द वर्ड मीनिंग्स, वी हैव डन द कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंडिंग. सो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस आर टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन. आपको लेसन कितना समझ में आया ये चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस होती हैं. ओके? नाउ टुडे चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल बी डूइंग ग्रामर ग्ली एंड देन we will be doing word building. Now grammar glee is based on grammar part, and I have told you that grammar is extremely important in any language. किसी भी लैंग्वेज में जो ग्रामर का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Why? क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तक कि हमें प्रॉपर ग्रामर नहीं आएगी, अगर हमें पता नहीं है कि हमें किस वर्ड को कहाँ पे और कैसे यूज करना है, टिल देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली. ना आप वर्बली अपने आप को अच्छे से बोल पाओगे, ना रिटन, ना आप अच्छे से लिख पाओगे. ठीक है? सो ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज. सो ग्रामर में टुडे वी विल बी डूइंग द यूज ऑफ इज, एम एंड आर. ठीक है? जैसे इसमें आपने देखा कि माई नेम इज टिया, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old. My favorite toy is a. So let us see, where do we use is, where do we use am, and where do we use are. So GRAMMAR, grammar, glee. Fine. In this we will be doing use of is, am
आर। ठीक है, कहाँ पे हम इज यूज करते हैं, कहाँ पे हम एम यूज करते हैं, कहाँ पे हम आर यूज करते हैं। नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 6 इन योर इंग्लिश बुक। दिस इज योर इंग्लिश बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 6. Now, where do we use? We will start with am. ठीक है, लेसन पढ़ा अभी, लेसन में नोटिस किया होगा टिया सेज आई एम टिया, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old. Okay, so what is she using with I? I means when anyone talks about himself or herself. ठीक है, आई का मतलब है when we talk in first person, मतलब जब हम अपने बारे में बात करते हैं, that is I. आप भी जब किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो हाउ डू यू से? I am रुद्र. Suppose your name is रुद्र, so how do you say? You say I am रुद्र. Okay, so with I we always use am when we talk about ourselves. जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम आई यूज करते हैं, एंड आई के साथ हम हमेशा वी ऑलवेज यूज एम. सो एम इज यूज ओनली विथ आई. एम इज नॉट यूज विथ एनी अदर वर्ड. ही एम, शी एम, वी एम, नो, वी ऑलवेज यूज एम. एम इज यूज ओनली विथ आई. ठीक है, सिर्फ आई के साथ ही एम यूज करते हैं. ओके, am is used only with I. So am को हम कहाँ करते हैं? am is used with I. ठीक है, and I को हम कब यूज करते हैं? When do we use I? We use I when we talk about ourselves. जब हम अपने बारे में बात करते हैं then we use I. So am is used only with I. For example, EG. EG का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल. जैसे हम फॉर, FOR, फॉर EXAMPLE, इतना सारा लिखने की बजाय हम EG लिखते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर एग्जाम्पल वी राइट EG. ठीक है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल. सो वी यूज एम विथ आई. एम इज यूज ओनली विथ आई. एंड आई को आप कब यूज करते हो? व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ. आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old, आई एम रुद्र, आई एम रीना. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय. ठीक है, सो यू विल सी दैट एम इज यूज ओनली विथ आई. फाइन. देन नेक्स्ट इज द यूज ऑफ इज. Where do we use is? Is used for singular countable nouns. ठीक है, my beach ball is. My beach ball is very colorful. ठीक है, so is used for singular one. UKG में भी I am sure you must have read about one and many. वन एंड मैनी पढ़ा होगा. तो इज यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ ओनली वन, व्हेन वी टॉक ऑफ समथिंग सिंगुलर. ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन है, सलोनी इज अ गर्ल, रिया इज अ गर्ल, राहुल इज अ बॉय, माई बीच बॉल इज वेरी कलरफुल. ठीक है, माई फेवरेट टॉय इज माई बीच बॉल. सो इज यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. कोई भी नेमिंग वर्ड है, when we talk of only one, जब हम एक की बात करते हैं then we use is. He is a boy, she is a girl. ठीक है, Rahul is a boy, Rahul is 5 years old, Rahul is very naughty. So when we talk of any one singular noun then we use is. So is used with one person or thing. With one person or thing. For example, the example given in the book is Saloni is a girl. Saloni is a girl.
Here we are talking about a girl named Saloni. एक गर्ल की बात करें, we are talking of only one girl. So Saloni is a girl. Rahul is a boy. Here we are talking about one boy named Rahul. Rahul is a boy. It is my book. ठीक है, it is my book मतलब ये मेरी बुक है. We are talking about one book. ठीक है, my beach ball is very colorful. So is used with only one person or thing. किसी भी one person की जब हम बात करते हैं या किसी भी एक चीज की बात करते हैं, so we use is. ठीक है, and are is used. am हो गया, is हो गया, are. Now are is used when we talk of many. जैसे जब singular that is one की बात करते हैं, when we talk of only one, then we use is. When we talk of more than one, 2, 3, 5, 10 कुछ भी कितना भी है, then we use are. ठीक है, are is used with two or more persons or things. This is used with one person or thing. Are is used with more than one, or we can say many. With are is used with two or more persons or things. ठीक है, for example, they are girls. When we are talking of one girl, suppose her name is Saloni, so we say Saloni is a girl. If there are more than one में 2 है, 3 है, 5, 10, 20 कितने भी हैं, anything which is more than one is many. ठीक है, this is singular and plural हम पढ़ते हैं one and many. Anything one is singular, anything more than one, even if it is 1.5, 2, 3, 4, 5, 10, 20 कितना भी नंबर हो, that is many. Saloni is a girl. They are girls. अभी there may be 2 girls, there may be 5 girls, there may be 6 girls, there may be 20 girls. ठीक है, it may be a group of 20 girls. So they are girls. ठीक है, जैसे Rahul is a boy, they are boys. It is my book. ठीक है, यहाँ पे we are talking of one book, so we say it is my book. If there are more than one book, there are 2 books, 3 books, 5 books, so what do we say? We say these are my books. ठीक है, here we are talking about books. So it may be books का मतलब है, it may be 2, it may be 3, it may be 5, कितना भी नंबर हो सकता है. So if it is more than one, then we use are. These are my books. Okay, so this is how we use is, am and are. ठीक है, हम is, am and are को कहाँ और कैसे यूज करते हैं. Remember children, am is used only with I. Am is not used with any other word. This am my book, it am my book, she am a girl. No, am is used only with I. I am a girl, I am a boy, I am Ria, I am Tia, I am Mona, I am 6 years old. Okay, only with I we use am. Is used with one person or thing. That is when we talk of one person or anything one, then we use is. And when we talk of any person or anything more than one, then we use are. It is my book, these are my books. She is a girl, they are girls. He is a boy, they are boys. It is a tree, these are trees. So anything, any person or anything, when one in number, we use is. When more than one in number, we use are. Okay? So let us do the exercises now. The exercise based on the use of is, am and are. So we will be doing fill in the blanks.
This is on page number 7, children, in your English book. Okay, this is page number 7 in your English book. So I hope you are doing it along with me. So the exercise is complete, COMPLETE, complete the following sentences using is, am, are. ठीक है, complete the following sentences using is, am and are. And are. Okay, so the first sentence is I a tall boy. Children, I will write the sentences first and then we will complete them. Okay, I will write the sentences first. I, a tall boy. Priya dash my friend. And third is they are late. Two more are there, children. First let us complete these three. Now first one, I a tall boy. Okay, now tell me what do we use with I. I के साथ हम क्या यूज करते हैं? With I we use only, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, with I we use only am. I के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ am यूज करते हैं. So I am a tall boy. I am a boy. I am a tall boy. I am a girl. I am a beautiful girl. Okay. So यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? We will use am because with I we only use am. So I am a tall boy. I am a tall boy. Then Priya, my friend. Here we are talking about one girl, that is Priya. So who is my friend? Priya is my friend. Mona is my friend. Here we are talking about only one girl. When we talk of only one person or one thing, then we use is. यहाँ पे हम one girl के बारे में बात कर रहे हैं. So we will use is. Priya is my friend. Okay. Then third one, they late. Late का मतलब होता है देर. बोलते हैं ना कि I am late ma'am, sorry I am late to the class today. Late मतलब देर, देर हो जाना. ठीक है. So they late. they का मतलब है more than one. अभी आगे हम ये भी पढ़ेंगे. Like for one we say it is a tree. ठीक है. And if it is more than one, we say these are trees. That is a girl. They are girls. So if it is one girl, we say that is a girl or that is a boy. When it is more than one, then we say they are girls or they are boys. So they is also used for plural. That is when something is more than one. जैसे अभी हम आगे और पढ़ेंगे nouns, pronouns. When we discuss about different parts, उसमें अभी हम पढ़ेंगे. So they is used when something is more than one. ठीक है. That is a girl. They are girls. So they का मतलब ये plural. They is used when something is more than one. So they के साथ we always use are. So they are late. जैसे if one child, if we are talking about one child, we will say Rohan is late or he is late to school today. Riya is late to school today. Rohan and Riya are brother siblings, bhai बहन है. Rohan and Riya are late to school today. ठीक है. So in place of Rohan and Riya, we can also say they. They are late today. So with plural, we use are. Now complete this in your book, children.
2 more fill in the blanks are there. First complete these 3. I hope children everyone has done this. सबने कर लिया, ठीक है. अभी इसको मैं रब कर रही हूँ and we will be doing 2 more. There are 2 more. जैसे I said there are. ठीक है, 3 हमने कर लिए. Total there are 5 fill in the blanks. It is a blank. When there are more than 1, we say these are blanks. So there are 5 fill in the blanks. We have done 3. 2 more are left. So I hope everyone has written these 3. Now 4 and 5. 4 is she, my younger, I'm writing the page also, page number 7. Children, you have 2 books in English, okay? One is your main course book and one is grammar book, that is Superb English Grammar. This is your main course book. Wordsworth English Reader, this is your main course book, okay? Now, she, my younger sister. And second is, fifth is Hari and Rita, my friends. Okay. Now she, that means we are using it for a girl. He and she words होते हैं ना. He words are used for male and she words are used for female. So here when we say she, that means we are talking of one girl. She, my younger sister. So that means we are talking of one girl. So when something is one or any person is one, then what do we use? अभी मैंने पूरा बताया. Then we use is. यहाँ पे आप क्या fill up करोगे? She is my younger sister. ठीक है? अगर if it is more than one girl, अगर one से ज़्यादा है, then we will say they are my younger sisters. Or we can say they are my sisters. वो मेरी sisters हैं. So here when we are talking of more than one, then we use are. But here we are talking of only one girl. She is my younger sister. Okay? And then Hari and Rita dash my friends. Now Hari and Rita, that means these are two. We are talking of two children. Hari and Rita. One is a boy, one is a girl. It may be 2 boys, 2 girls, 1 boy, 1 girl, anything. There is more than one child. एक से ज़्यादा है. There are 2 children. So what do we use? Are. Hari and Rita are my friends. If you talk about only Hari, then you will say Hari is my friend. If you talk about only Rita, then you say Rita is my friend. But we are talking about Hari and Rita together. So Hari and Rita are my friends. Okay? Now complete this, children. I'm standing at the side. Complete your work. Completed? Completed? सबने कर लिया? ठीक है? I hope everyone has done. I'm again coming to the side. If anyone has not completed, अगर किसी का अभी भी छूटा हुआ है, so you can complete this. Okay? Now next, children, we will be doing word building. ठीक है? अगर आज ये complete होगा तो fine. Otherwise, we will complete this in the next class. Okay? So I'm going to rub this. Achha, okay. Same thing I am going to explain with few examples. Okay?
मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूं. You tell me whether we use is, am or are. These are not there in the book. ठीक है, ये बुक की एक्सरसाइजेस नहीं है. These are not book exercises. ठीक है, I'm simply going to write few sentences. You will tell me whether we will complete the sentences with is, am or are. Okay, this is just your practice. I 8 years old. This my book. These books Sohan best friend Tia and I dash best friends. Okay children, these again I am repeating, these sentences are not there in the book. ठीक है, अभी जैसे मैंने use of is, am and are बताया, we have done the exercises which are there in the book. These are written, these sentences just for your practice. ठीक है, just to check your understanding that how much have you understood. Okay, so these are not given in the book and you don't have to write these. ठीक है, जो book की exercise अभी मैंने कराई, that you have to do in your book only. पेज नंबर 7 की जो मैंने एक्सरसाइज करवाई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इज, एम एंड आर, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन द बुक इटसेल्फ. अगेन आई एम रिपीटिंग, द एक्सरसाइजेस इन द बुक विल बी कंप्लीटेड इन द बुक इटसेल्फ. जब भी नोटबुक का वर्क होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लाइक स्पेल वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स, दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ लेट अस कंप्लीट दिस. आई 8 years old. ठीक है, तो आई के साथ मैंने क्या बताया था? विथ आई व्हाट डू वी यूज? विथ आई वी यूज एम ओनली. आई के साथ सिर्फ एम यूज करते हैं. तो आई एम 8 years old. ठीक है, आई एम 8 years old. आई एम वेरी टॉल. मैं बहुत टॉल हूं. सो आई के साथ वी यूज ओनली एम. आई के साथ एम इज यूज ओनली विथ आई. ठीक है, आई से दिस वे कि एम इज यूज ओनली विथ आई. नाउ दिस माई बुक. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन बुक. वन से ज्यादा होने पे क्या होता है? वी एड एस. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन बुक. ठीक है, सो दिस इज माई book. This is my book. These my books. This is also used for singular. This and that. When something is near us, we say this. If something is far from us, we say that. This is my book. That is my house. वो जो दूर में घर दिख रहा है वो मेरा घर है. So that is my house. This is my book. Okay? So this and that is used when something is only one in number. And if anything or any person is more than one in number, then we use these and those. For this is my book. These are my books. Here we have used book. Here we have used books. That is my house. Those are houses. ठीक है, दूर हाउसेस दिखाई पड़ रहे, दोज आर हाउसेस. दिस इज माई हाउस. दोज आर हाउसेस. ओके, दैट इज माई हाउस. दोज आर हाउसेस. देन सोहन माई बेस्ट फ्रेंड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय, दैट इज सोहन. माई बेस्ट फ्रेंड. एंड यहाँ पे भी वी हैव नॉट एडेड एस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय, दैट इज सोहन.
So Sohan is my best friend. And Tia and I, best friends. Tia and I, that means we are talking about two. There are more than one child. There is more than one child. Tia and I. And here also we have added S with friends. So Tia and I are. यहाँ पे, here there is more than one child. We are talking about two children. Tia and I are best friends. Okay, children. So I hope the use of is, am and are is clear to you now. We will be doing it in our grammar book also. Okay. So अगर कोई doubt होगा तो you can clarify it in the online class. So okay, children. So that is all for the day. Thank you so much.